होंगे कि लिवर जो है वो कौन से वेस्ट से डील कर रहा होता है पर्टिकुलरली, लिवर कौन से वेस्ट से डील कर रहा होता है पर्टिकुलरली। तो अगर आपको याद हो लास्ट टाइम आई टोल्ड यू a very important and toxic metabolic waste, nitrogen containing waste, and that was, yes, ammonia. That was ammonia. ठीक है जी। तो liver is dealing particularly with this dangerous toxic waste। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो आपके पास हेडिंग आ जाएगी बेटा, रोल ऑफ लिवर, रोल ऑफ लिवर इन एक्सक्रीशन, रोल ऑफ लिवर इन एक्सक्रीशन। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं बेटा, we are going to talk about today role of liver in excretion। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, इसको अलग से पूछा जाता है। we will have a quick discussion on this topic। तो ये पार्ट्स आपको नोट्स में मिसिंग है, तो इसको और अच्छे से नोट कीजिएगा ताकि सारे पॉइंट्स आपके पास आ जाएं। तो बेटा लिवर में अमोनिया के साथ लिवर क्या कर रहा है, डील कर रहा है। कैसे डील कर रहा है, अमोनिया कहां से आती है, कैसे फॉर्म होती है, सारी बातें हमने करनी है। अब होता क्या है, अमोनिया का जो मेजर सोर्स है हमारी बॉडी में वो प्रोटीन है। अब आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि प्रोटीन जो एक्सेसिव होता है वो हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती। अच्छा, अब जो हम प्रोटीन इन डाइट इनटेक कर रहे हैं तो हम कोई कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक नहीं कर रहे हैं कि लेट्स सपोज हमारी आवर बॉडी नीड्स 10 grams of protein or 7 grams or 3 grams of protein per day, so are we taking 3 grams measure करके? No. So it means that sometimes we may take protein lesser than the requirement of the body and sometimes we may go beyond the range, beyond the requirement. So when we go beyond the requirement, so it means the protein which is required by the body will be kept by the body, but the excessive protein जो आपकी बॉडी में आपने ले लिया है वो एज वेल एज द प्रोटीन जो आपकी बॉडी में बिल्डिंग में इस्तेमाल हुआ था, हार्मोन था, एंजाइम था, जो अब ब्रेक डाउन हो रहा है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्पीशी, वहां से भी जो प्रोटीन है वो लिवर में आएगा। तो ऑल दीज सोर्सेज आर सप्लाइंग एक्सेसिव प्रोटीन्स। यहां से एक्सेसिव प्रोटीन जो आपकी बॉडी में या तो डाइट से आ गए थे या जो है हार्मोन या एंजाइम्स डीनेचर हुए हैं, एंड फ्रॉम दोज एंजाइम्स और हार्मोन्स जो पेप्टाइड हार्मोन्स उनकी बात कर रहा हूं, तो वहां से ये प्रोटीन्स ड्राइव हुए हैं और लिवर में आए। So basically the story begins when the protein, excessive protein enters in liver. Now beta, step number one. Step number one mein what we see that these proteins when they come into the liver, they undergo the process of hydrolysis. They undergo the process of hydrolysis. Agar if I show the proteins like this, it is a polypeptide chain, I mean it is a chain of amino acid. So let's suppose this is protein, so in the liver it is hydrolyzed. Hydrolyzed का मतलब क्या है बेटा, it is broken down, the peptide bonds, these bonds which are peptide bonds, these bonds are broken down so that protein can break up into to release free amino acids. So basically the peptide bonds are broken down and amino acids sets free. ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेज with excess protein in your liver is the hydrolysis. The protein undergoes the breakdown and peptide bonds are broken down by the liver and amino acids are formed. Free amino acids are formed. Now these if the body can utilize some of the amino acids, it will utilize those amino acids. But if it is in so much excess that body cannot keep it, तो फिर body क्या करती है? Now the second stage, first stage was stage number one. Stage number one was hydrolysis. Role of liver भी हम पढ़ रहे हैं, तो first step was is hydrolysis. Now it undergoes a second step. Amino acids मैं यहाँ label कर देता हूँ. These are amino acids, amino acids, amino acids, amino acids, amino acids. So now these amino acids undergoes the second stage, and that second stage, stage 2, is deamination. It is deamination. This is the second stage. It is deamination. जहां पर हम क्या देखते हैं, जरा गौर कीजिएगा, deamination, अमाइनो एसिड से अमाइन ग्रुप निकलना। अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपको याद है फ्रॉम योर एस नॉलेज से बेटा क्विकली रिकॉल कीजिएगा। अमाइनो एसिड, एनी अमाइनो एसिड हैज सम बेसिक स्ट्रक्चर, सेम सिमिलैरिटी होती है। उसमें क्या होता है, एक हमारे पास अमाइन ग्रुप होता है, एक हमारे पास जनाब एक कार्बन चेन होती है, देन वी हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड देन वी हैव द साइड चेन R chain. ठीक है,
साइड अल्काइल कार्बन की चेन होती है। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर फॉर ऑल द अमाइनो एसिड्स। तो ऑल द अमाइनो एसिड अगर आप यहां पर देखें, ऑल अमाइनो एसिड्स कंटेन दिस अमाइन ग्रुप। तो बॉडी चूंकि जानती है कि अमाइन ग्रुप कैन बी टॉक्सिक लेटर ऑन, तो द लिवर हैज टू रिमूव दिस कंटेंट। तो डीअमाइनेशन इज बेसिकली द सेपरेशन ऑफ amine group from the amino acid. It is the separation of amine group from the amino acid. It is the separation of amine group from amino acid. तो amine group is separated. ठीक है, डीअमाइनेशन में amine group यहां पर क्या हो गया बेटा, अलग हो गया, and this amine group then gains hydrogen either from this carboxylic group or from water, and as a result this amine group rapidly converts into, yes please, this receives hydrogen either from the carboxylic group or it can receive hydrogen from the plasma or from the water in the liver cells. ठीक है, and it will convert into ammonia. This is how ammonia is formed. ठीक है जी, let me repeat it one more time for you guys. Number one, when excessive protein is there in your body, it is transported to liver. In liver, it rapidly undergoes the hydrolysis where peptide bonds are broken, and as a result of the breaking down of the peptide bonds, amino acids get free. Now these amino acids undergo, याद कीजिएगा second process क्या है, these amino acids undergo the process of deamination where amine group from each amino acid gets separated. This amine group rapidly accepts hydrogen either from the water or sometimes from the carboxylic group and convert into ammonia. Now this is the ammonia. This is how the ammonia is formed. सवाल आ चुका एग्जाम में, exactly how liver forms ammonia. So this is the mechanism how ammonia is formed. Now as soon as the ammonia forms, you know, I have told you in the last lecture that ammonia is highly toxic. Ammonia is highly lethal. It can cause encephalopathy. It can change the blood pH. So as soon as it forms, ammonia is allowed, or ammonia is forced to enter in a cycle going on in the liver. ठीक है, I should draw a cycle in much proper way here. Ammonia, as soon as it forms, ammonia rapidly, yes please, undergoes, बोलेंगे बेटा, it rapidly undergoes okay, let me just draw it clearly. Just give me one more second. Okay, now, sorry. It undergoes a cycle going on in the hepatic cells, which means liver cell, okay, and ammonia is forced to enter in this cycle. But this cycle is called as urea cycle. So basically, within the liver, hydrolysis of proteins occurs. Within the liver, deamination occurs. Within the liver, ammonia is forced to enter into a cyclic process called urea cycle. And in this process, basically, here is the product. We call that product ornithine. Ornithine. Ornithine is the product, and this ornithine accepts nitrogen, ठीक है जी, and it forms citrulline. Okay, it forms what? Citrulline. Oh shit. Let me draw it again for you guys. Ornithine है बेटा, and here is citrulline. ठीक है, you don't have to remember the name exactly. ठीक है, just you have to know that ammonia is allowed or forced to enter into a cycle called urea cycle or ornithine cycle sometime. Ornithine cycle. ठीक है जी, and during this cycle, you don't have to study this cycle in detail. During this cycle, when ammonia enters, it enters as ammonia, but during this cycle, ammonia is converted into something called urea. Ammonia is converted to something called urea.
which is again a nitrogen containing waste, but it is much less toxic than ammonia. ठीक है, the formula of urea is CO, this is CO NH2 twice. CONH2 twice. This is urea and it is derived from ammonia, but it is much less toxic than ammonia. Remember, I've told you that ammonia ka 1 gram remove karne ke liye we need how much water? 500 ml of water. But to remove 1 grams of urea, we only need 1 ml of water. 1 ml only. कहां पर हमें वहां 500 ml की requirement है, यहां पर we only require 1 ml of water to remove 1 gram of यूरिया. तो इट मींस के इसकी जो ट्रांसपोर्ट, इसकी रिक्वायरमेंट बड़ी लोअर साइड पर है एज कंपेयर टू अमोनिया. तो बेसिकली लिवर is the structure organ which fixes the ammonia, converted into urea, which is much less toxic, and that's how liver plays its role. अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, ये जो रिमेनिंग पार्ट था यहाँ पर, ये वाला पार्ट जो अमाइन डीअमाइनेशन के बाद बच गया था, दिस पार्ट is called keto acid. This part is called keto acid, and this is, as it is a carbon containing part, it can be stored by the liver or it can be converted into carbohydrate or sometimes in fat and then can be stored. Or sometimes it can carbohydrate में किस में convert हो जाता है? Glucose में, and that can be utilized to produce energy later on. तो दिस इज हाउ जो रिमेनिंग पार्ट था, जो साथ में बाय प्रोडक्ट मिला है कीटो एसिड का, वो फिर इसको यूटिलाइज करते हैं लिवर. ठीक है जी. तो दैट्स हाउ द फंक्शन गोज ऑन. तो दिस इज बेसिकली द डिस्कशन, वी कॉल इट द रोल ऑफ लिवर इन एक्सक्रीशन. तो आई शुड समराइज द डिस्कशन अब तक जो हमने की है, कि लिवर इज डीलिंग विद लॉट ऑफ थिंग्स. मैंने रिपीटेडली कहा है कि लिवर परफॉर्म्स मोर देन 500 डिफरेंट फंक्शंस, जिसमें उसका एक्सक्रीटरी रोल भी है. इन एक्सक्रीटरी फंक्शन लिवर रिसीव्स एक्सेसिव अमाइनो एसिड्स. हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइनो एसिड इज डन बाय द लिवर. एज अ रिजल्ट फ्री अमाइनो एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड. लिवर चेक्स कि क्या वो उन फ्री अमाइनो एसिड्स को यूज कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है. इफ कर सकता है, उसको रोक लेंगे. अदरवाइज it starts breaking down those amino acids. The process is called deamination, where amine group gets separated, and after accepting hydrogen either from the carboxylic group or from the water in the cell, the amine group converts into ammonia, which is rapidly forced into a cyclic process again going on in the liver cells, and that process is called urea cycle, because it results in the conversion of ammonia into urea, which is much less toxic than ammonia. मैंने कंपैरिजन के लिए बताया कि अमोनिया रिक्वायर्स 1 ग्राम ऑफ अमोनिया रिक्वायर 500 ml ऑफ वाटर टू गेट रिमूव्ड, एंड यूरिया रिक्वायर्स ओनली 1 ml ऑफ वाटर टू गेट रिमूव्ड. ठीक है. यूरिया साइकिल कैन आल्सो बी कॉल्ड एज ऑर्निथीन साइकिल, बिकॉज यूरिया अमोनिया कंबाइंस विद ऑर्निथीन इन द यूरिया साइकिल. ठीक है जी. उसके बाद फिर जो रिमेनिंग पार्ट होता है अमाइनो एसिड का आफ्टर डीअमाइनेशन, दैट इज कॉल्ड कीटो एसिड, एंड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट और अ फैट डिपेंडिंग ऑन द बॉडीज नीड रिक्वायरमेंट. और उसके बाद उसको लेटर ऑन हम किसी और तरह से यूटिलाइज भी कर सकते हैं. तो दैट्स ऑल अबाउट द रोल ऑफ लिवर एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन. ठीक है जी. तो आप इसको प्लीज अपने पास अब अच्छे से नोट कर लें. मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूं, जिसको आप अच्छे से नोट कीजिए बेटा, एंड देन यहां से हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे.